Hello students, let us today begin with the third lesson from the first unit 1.3, the cop and the anthem. It is actually a very beautiful and interesting story to read and understand. We will begin with the icebreakers. Now these icebreakers as usual will help us to understand the background of the story. The first activity under icebreaker, it wants you to find out different ways how can we protect ourselves from cold climate. Now this is a web and I'm giving you just a few suggestive answers. So how can we think about the ways to protect from cold climate? By remaining at home. If we are at home, we are definitely able to protect ourselves from the intense cold. If we put on woolen clothes, these clothes will also help us in protecting from the cold. The use of different machines we do. So room heater is one such machine that helps us to protect from the cold. And also the traditional fireplace. यदि हम fireplace लगाते हैं तो भी we can protect ourselves from the cold weather. The second point, it wants you to understand when you see a cop approaching. Now, cop, the title also gives you two words, the cop and the anthem. Now, the cop is a policeman, right? So, and the anthem is the song. So, for the second activity, we will try to understand what can be the probable explanations. When you see a cop approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situations when you feel relieved or scared. Again, I am giving you some suggestive answers. यदि हम कभी पुलिस को देखते हैं हमारी तरफ आते हुए तो कब हमको अच्छा लगता है और कब हम डरते हैं. तो अगेन दीज आर सजेस्टिव आंसर्स. रिलीव्ड हमें कब लगता है? यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट. आप अकेले हैं, बहुत अंधेरा हो चुका है और पुलिस दिखता है तो you feel better because you know that he will definitely help you. When you are in trouble and need help, जब आप कहीं तकलीफ में हो और आपको मदद की जरूरत है तो भी पुलिस को देखने से आपको अच्छा लगता है. You are his friend, यदि कोई पुलिसमैन आपका दोस्त है तो भी उसको देख के आपको अच्छा लगेगा. और डरते कब है जब हम पुलिस को देखते हैं तो यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस. आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है तो आपको लगता है कि आने वाला हर पुलिसमैन आपको शायद क्वेश्चन करेगा और आपको मांगेगा कि आपका लाइसेंस दिखाओ. यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. आप रास्ते पर हो, गाड़ी चला रहे हो लेकिन आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो भी डर लगता है पुलिस को देख के. यू आर इन बैड कंपनी, या फिर आपके साथ जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं तो भी आपको डर लगता है. The third activity, discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given for you. What are the motivating things? ऐसी कोई प्रेरक बातें हैं जो कि हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए हमारा उपयोग करती है या हमें सहायता मिलती है. तो again, a few answers are here. Listening to an inspiring speech. किसी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच सुनकर हमें लगता है कि हमने भी कुछ अच्छा करना चाहिए. लिसनिंग टू मोटिवेटिंग सॉन्ग्स और वॉर सॉन्ग्स. समर गीत या युद्ध के गीत या बहुत ही प्रेरणादायी गीत सुनकर हमें, जैसे हम होंगे कामयाब, ये एक बहुत ही फेमस मोटिवेटिंग सॉन्ग है. ये सॉन्ग सुनने से हमें लगता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए. लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, वीमेन एंड हीरोज. जब हम थोर व्यक्ति, उनके जीवनी के बारे में सुनते हैं तो भी हम उनसे
प्रेरणा लेते हैं या इंस्पिरेशन मिलती है, या फिर फॉलोइंग एन आइडल और एन आइडियल पर्सन, कोई एक आदर्श व्यक्ति जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, उसके लाइफ को देखकर या उसके तौर तरीके को देखकर हम प्रेरित होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक पहला पॉइंट है कि यदि जाड़े का मौसम है, यदि विंटर है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें घर की जरूरत है, हमें अच्छे कपड़ों की जरूरत है, हमें एक अच्छे वातावरण की जरूरत है जिनका उपयोग करके हम अपने आप की रक्षा कर सके बहुत कड़ाके की ठंड से। पुलिसमैन को देख के कभी हमको अच्छा लगता है और कभी हम डर जाते हैं, और कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे विचार हमारे जीवन को बदल देते हैं। ये 3 पॉइंट्स है जो कि हम when we will be reading the cop and the anthem, they are going to help us understand the situation in a better way. So let us now try to understand a few points regarding the story writer, very famous English story writer O. Henry, 1862 to 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. पेन नेम आप सभी जानते हो, पेन नेम यानी लेखन के लिए जिस नाम का उपयोग किया जाता है, इट इज पेन नेम। ही वॉज अ वोरेशियस रीडर सिंस चाइल्डहुड। वोरेशियस रीडर, चतुरस्त्र जो रीडिंग करते हैं, बहुत अत्यधिक वाचन करते हैं, ऐसे लोग। He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasional cartoonist. So that is how he managed his livelihood. The story, The Cop and the Anthem, is one of O. Henry's well-known stories. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted ways of thoughts and endings in almost every story. Now, this is a very important point regarding the way O. Henry had been writing. Smile with tears means there is definitely humor, smile, something that makes you laugh, but the same thing turns out in such a way that there are tears in your eyes. So there is always a twist. ट्विस्ट यानी जो परिस्थिति है कहानी में, वो अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी वजह से स्माइल्स जो है दे चेंज इनटू टीयर्स. This is how the life is exactly, and that is what the story writer wants all of us to understand. And so we come across that his twisted ways and thoughts and endings, the ways are twisted. So situation कहाँ कैसे बदल जाए इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, and that is the skill of the writer for which he is very famous for. O. Henry is famous for his very simple yet a twisted way of writing, humorous as well as very touching. In this story, the main character Soapy, main character is known as protagonist, the hero of the story. Who is he? He is a vagabond and a person with criminal background. Vagabond यानी जिप्सी, जिप्सी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी एक जगह नहीं रहता, घूमते रहता है. So he is a vagabond. He is an aimless young man, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जो कि लक्ष्य नहीं है उसका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल है. क्रिमिनल यानी बहुत बड़ा गुनहगार ऐसा है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ हद तक छोटी मोटी गलत काम करते हुए वो अपना जीवन चला रहा है. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. अब लेखक अमेरिकन है,
तो यहाँ का बैकग्राउंड भी डेफिनेटली अमेरिकन है। तो अमेरिका में जाड़े का जो सीजन है, विंटर सीजन है, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। और जो कि ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है, हमको एक अच्छे घर की जरूरत है, हमें अच्छे कपड़ों की जरूरत है, हमें फायर प्लेस की जरूरत है। लेकिन जो कि हमको पहले ही बताया है कि सोफी एक वैगाबॉन्ड है, घूमते रहता है, तो ये इसके पास इसमें से कोई भी चीज नहीं है। तो वो कोशिश ये कर रहा है कि जो कि अब विंटर सीजन है, वो कम से कम प्रिजन में चला जाए। द स्टोरी एंड्स in an unexpected way. O. Henry has depicted Sophie's futile is fruitless, futile attempts uh, to get arrested in a very humorous way. Venice manner. सोपी जो बार बार प्रयास करता है कि वो प्रिजन में जाए, वो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से ओ हेनरी ने बताया है। आप लोग भी when we will read the story, you will definitely enjoy the way the writer has described the ways of soap. The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. Now just try to understand the ideas. The policeman is associated with freedom. The, the policeman, the cop and the anthem, the policeman and the song. Now, both these, they are associated with the idea of freedom and confinement. Now, freedom and confinement, these are two opposites. फ्रीडम यानी आजादी और कंफाइनमेंट यानी परतंत्रता। या जब आप जेल में होते हो तो डेफिनेटली आप कंफाइंड होते हो। इनिशियली सोपी फील्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज। सोपी को ये लगता था if he is in prison, he is free from miseries and worries. In confinement, that is in prison. The notes of anthem transform him from within, and he resolves to work hard. So he faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. So the twist of the situation is mentioned here. As we will read and study the story, you will definitely understand the idea of freedom and confinement and the way uh, Sophie thinks and the way the fate rules over Sophie's life.